Can you hear me? Yes. Okay, great. So let's start. People are still joining, but I see maximum of you have joined back. So let's start. Okay, I did the test failover. It took some time. And again, you can go back and check here. You can come to Vault. This is exactly like backup. So you come here and you can see the details here, that what is in progress, what is happening, what is not happening, all details you can see here whenever it comes to the site recovery. I'm in wrong vault. This one we are talking about. Here it is. So you can see here that what is in progress, but this one has done completely. So this machine, the replication is healthy. Status shows cleanup test failover pending, which means we have done the test failover and the cleaning up of that is pending. इसको जो है आप what do you say, आपके test failover को you don't keep it there forever, right? This is just for a test. So once you're done with that, you have to clean that up. So this is how it looks, that it has been done on this page. This is how it looks, right? You won't be able to do another test failover until you clean up. You won't be able to do the actual failover until you clean up, and you can simply disable the replication. But before we do the cleanup, let's go ahead and see how it looks. जो replication हुआ है दिखता कैसे है? What is it? Right, so let's have a look at that. So it will be the same resource group which was created there in East US region. So this is the resource group which was replicated over there under East US region or East Asia. East Asia we selected, sorry, not US. But R was in Central India, right? The actual one, the source one. And the target one is East Asia. So this is how it looks, guys. See, after this, I have a virtual machine here. Everything is there. I can simply go ahead and log in and my application is up and running. But what is missing here? Compared to the actual one, what do you think is missing here? Something is not here. Energy Yes, prototype. energy is not there. And it's not only energy. Let's say that it is a huge application with multiple servers. I have been telling you this many times that in practice we take only one server, but you guys have to, you know, imagine it that in when it comes to live production environment, there will be n number of servers for one application. So you may have a load balancer also. Load balancer जो है आपका replicate नहीं होता है. And what gets replicated, what doesn't get replicated, for that you can use this link. I can share it with you. इसमें पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है कि क्या क्या replicate होगा, क्या replicate नहीं होगा. Okay, NIC replicate होगा, internal load balancer supported है, replicate होगा नहीं होगा, you'll have to read it here. If it is there, पहले नहीं होता था, now it says supported, शायद होता होगा, we'll have to check that, or you guys can check that. Okay, so यहाँ पर पूरी लिस्ट आपकी दी हुई है यहाँ पर डिटेल में, पर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. इतना डिटेल में इंटरव्यू में तब होगा ना व्हेन यू आर स्पेसिफिकली गोइंग फॉर डीआर. एक डीआर के इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तब इतना डिटेल में होगा. इतना डिटेल में कोई नहीं पूछने वाला. आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डीआर का, right? And the options which we get. But still, if you want, you can go ahead. I'll share this link with you. And even if I don't share, you can simply search for the support metrics on Azure Site Recovery and you will get it, the up-to-date information. Okay, but काम चलाने इतनी चीजें जो है ऑलरेडी अप एंड रनिंग हो जाती है. विथ दिस जो भी चीजें पेंडिंग है, मे बी कोई एनएसजी हो गया या कोई फायरवॉल है, जिस भी तरह की चीजें हैं, हाउ डू यू टैकल विद दैट? टेस्ट फेलोर में तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है. टेस्ट में तो आपको इतना ही चेक करना था कि भाई वर्चुअल मशीन बन रही है, यू लॉग इन टू दिस एंड यू चेक द एप्लीकेशन, इट इज वर्किंग, दैट्स फाइन. एक्चुअल जब फेल ओवर करते हैं, दैट टाइम यू रिक्वायर्ड all other aspects, और सब कुछ आप लोगों को चाहिए होता है, right? So your application runs very smoothly. So what you will have to do there, मतलब you as in not you guys, what actually happens कि ये सारे जो resources है ना, इतने resources, इन सब का एक script लिखा हुआ होता है already. Whatever resources I have in my source environment और source region, उन सब का एक replication type का एक script लिखा होता है. And the moment these are being up, जैसे ही मैंने failover कर दिया, ये बहुत छोटा मशीन था इसलिए failover बहुत जल्दी हो गया. And this was a test failover. When I do the actual failover, it takes some time, takes 2 to 3 hours. So within those 2 to 3 hours,
you have to make sure that you create everything other than this virtual machine, और जितना चीजें replicate हुए हैं, इस replication के अलावा जो चीजें replicate नहीं हुई है, load balancer and other things, DNS switching वगैरह, वो सब आपको उस 2 hours में करना है। तो simultaneously Azure का पोर्टल भी काम कर रहा है, चीजें रेप्लिकेट करने में, एंड यू गाइस आर आल्सो वर्किंग मैन्युअली, नॉट पॉसिबल। मैन्युअली आप कर जाओगे 3 से 4 घंटे 5 घंटे उसी में लगेंगे। सो दिस हैज टू बी डन वाया ईदर टेराफॉर्म और पावरशेल स्क्रिप्ट, जो आपको डेफिनेटली नहीं लिखनी होती, वो आर्किटेक्ट टीम से आ जाती है आपको, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और उस पर काम जो है सपोर्ट टीम को करना होता है। सो यू आर सेफ, नीदर यू हैव टू राइट इट नॉर यू हैव टू एग्जीक्यूट इट, बट यू शुड नो इट कि इतना सब होता है इसमें। व्हेन यू आर क्लेमिंग दैट यू हैव वर्कड ऑन पोर्टल फॉर 5 years, यू शुड नो इट कि आर्किटेक्ट टीम इस तरह से भी देती है, सपोर्ट टीम इस तरह से काम भी करती है। यू कैन से इट वेरी क्लियरली, आई हैव नेवर फेस दिस प्रॉब्लम, बिकॉज आप अपने आप को प्रेजेंट ही कर रहे हो इम्प्लीमेंटेशन टीम वाले। इम्प्लीमेंटेशन टीम में कोई प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता ही नहीं है। व्हाई वुड यू डू इट? मैक्सिमम थिंग यू कुड डू इट इज सेटिंग अप डीआर, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उससे ज्यादा एक और चीज आप ये कर सकते हो, दैट बिफोर यू हैंड इट ओवर टू द क्लाइंट, टू अ टेस्ट डीआर, वो भी हमने यहाँ पर कर लिया। फॉर टेस्ट डीआर आपके पास कोई जल्दी नहीं है, अगर लोड बैलेंसर वगैरह बनाना भी, आप मैन्युअली भी बना लो, कोई इशू नहीं है, नहीं भी बना लो, यहाँ पर आपका टेस्ट डीआर जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, राइट? सो इट डजंट मैटर। सो आप लोग बोल सकते हो ये दैट आई हैव नेवर फेस्ड इट, बट ये नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी एलियन है, आई डोंट इवन नो व्हाट दिस इज, ये जार्गन है मेरे लिए, दैट शुड नॉट बी द केस। You should be able to say it, you should be able to explain it, you should be able to portray that okay, I know the concept and I can do it, but I never got a chance to do it, it wasn't a part of my job, मेरे स्कोप में नहीं था। इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पर हो गया सिंपली द सेम मशीन, एग्जैक्ट सेम मशीन यू हैव हियर। I won't be able to take RDP to this, I guess, because NSG नहीं है वहां पर, और NSG नहीं है तो won't be able to take RDP, और public IP भी यहाँ पर नहीं है। Okay. Uh, how do you think I can check this? I don't want to apply a public IP या कुछ भी ये नहीं करना है। Instead, I want to log into this machine. What comes to your mind? How can I do it? Based on whatever we have been doing, इतने दिन से जो कुछ हम कर रहे हैं, ये East US में है, right? And here's a machine. I just want to take RDP to this machine. How can I do it? You can use Bastion. Yeah, I can use Bastion, but still I don't want to इतना hassle करना ही नहीं है। Simple thing, I'll pick any other machine which is in East US or same VNet में जो भी मशीन होगी, उस मशीन को मैं एक उठा लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ, and then I'll take remote using this IP. Simple. Bastion is also correct, doable thing. It's not technically incorrect. Or you can also do VNet pairing between the हाँ, और अगर अलग अलग VNet में, पर उतना मुझको तामझाम करना ही नहीं है, उन सबसे तो बेटर होगा फिर मैं एक पब्लिक IP लगा दूं यहाँ पर, easiest task. But yes, both are correct. You can do a VNet pairing and from other machine take a remote to this machine. You can do the Azure Bastion and जिस भी तरह की आपकी कनेक्टिविटी, and if you already have your VPN is in place, जहां से आपके ऑन प्राइम से यहाँ पे कनेक्टिविटी है, you don't have to do anything, आप डायरेक्टली यहाँ से ये ले सकते हो, but somehow you will be able to do it. So this is how your failover works. Is it clear to everyone, guys? Do you have any question till test failover? टेस्ट फेल ओवर में आप लोगों का रेप्लिकेशन रुका नहीं है। वन थिंग अंडरस्टैंड गाइस, नाउ वी हैव आई हैव डन द टेस्ट फेल ओवर, और इस सेम टाइम पे मेरे एक्चुअल मशीन में कुछ चीजें लिखी जा रही है ना, वो मेरे फिर से जो यहाँ पर ये सिंक हो रहा है ना, दिस इज देयर, ये सारी चीजें कंटिन्यू हो रही है। एक टेम्परेरी डिस्क है, इफ आई गो हियर कैन यू सी देयर आर 2 डिस्क। एक डिस्क है जो इससे मशीन बनी हुई है मेरी, जिससे ओके दिस इज द डिस्क, लुक एट द नेम एसआर टेस्ट, ये मेरी मशीन बनी हुई है। और अगेन एक और डिस्क है जिसपे ऊपर वो रेप्लिकेशन चल ही रहा है। तो इस बीच में भी जो कुछ हो रहा है ना इस मशीन पे, रेप्लिकेशन नहीं रुका है। टेस्ट फेल ओवर में रेप्लिकेशन आपका नहीं रुका है। यहाँ पर जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं थ्रू दिस इज गोइंग टू दिस स्टोरेज अकाउंट से इस डिस्क में वो जा रहे हैं। दिस इज योर टेस्ट फेल ओवर। इज इट क्लियर गाइस टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस यू हैव? I'll consider that as no. I'll consider that as you guys have understood this, and I'll proceed. If you have any questions, feel free to stop me. So once you're done with your test failover, I told you this is not permanent. You will have to do a test
you'll have to clean up the failover. और सेम चीज हम इसमें भी करते हैं, माइग्रेशन में भी करते हैं. Hence I have been requesting you guys to be very focused. ASR और माइग्रेशन में बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिलने वाली है. So I'll do the clean test failover. I just click on this, whatever notes, was it successful, was it not successful, was it properly done, notes लिए थे, कौन कौन आपकी ऐप टीम से कौन था, राइट, किसने यहाँ पर टेस्टिंग की, उसके नोट्स क्या है, उसका ईमेल वगैरह, एवरीथिंग यू कैन राइट इन डिटेल, right? And you can mention that testing is completed, delete the test failover virtual machine. Simple. This you guys will do it for the very first time. जब आपने बना दिया, handover कर रहे हो आप, उस टाइम करोगे. At the time of handover, we did the test failover. Simon from test team or Simon from application team or XYZ person from application team was available. email वगैरह के कुछ subject line वगैरह डाल सकते हो, और जिस भी तरह का जो भी project का process होता है ना, वो कोई common नहीं, हर कंपनी का अलग अलग होता है कि आपको ये लिखना है, वो लिखना है. whatever you have to mention, you will mention and you will delete it and simply that's it. हाँ, जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होते हैं वो अपने नोट्स अलग से लिख देंगे. whenever they do it after 180 days, अगर वो लोग कर रहे हैं तो that is a different thing. Being an implementation team, आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हो, so that's it, इतना ही आपको करना है. So this is being done. Once this will be done, you will see क्लीन अप वाला यहाँ से चला जाएगा, ये दोनों फिर से एक्टिव हो जाएंगे. यू कैन डू अनदर टेस्ट फेल ओवर इफ यू वांट कुछ दिन के बाद, और यू कैन डू द एक्चुअल टेस्ट, एक्चुअल फेल ओवर. सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू वंस दिस इज अवेलेबल, विल डू द एक्चुअल फेल ओवर. अब हम जब एक्चुअल फेल ओवर कर रहे हैं, इस केस में भी मेरा सोर्स रीजन डाउन नहीं है, राइट? सो इससे पहले भी फाइनल फेल ओवर से पहले भी एक वो फाइनल सिंक्रोनाइजेशन, द वन व्हिच आई टॉक्ड अबाउट, इट विल डू इट, और इसमें बिल्कुल भी डेटा जो है लॉस नहीं होगा. अब फाइनल रिकवरी सिंक जो है बिफोर फेल ओवर, इट विल डू इट. वो कब होता है? जब मेरा सोर्स रीजन डाउन हो गया, और आई कैन डू दैट, आई कैन शट डाउन दैट मशीन. उस मशीन को मैं शट डाउन करता हूँ, 10 मिनट वेट करता हूँ, एंड देन आई विल डू द फेल ओवर. तब जो है फाइनल सिंक ट्राई तब भी करेगा, फाइनल रिकवरी सिंक तब भी एक अटेम्प्ट होगा, बट सक्सेसफुल नहीं होगा. ओके, सो आई थिंक दिस हैज डन. लेट्स सी. ओके, नाउ लुक एट दिस. तब तक एक वार्निंग बता रहा था दैट यू हैव नॉट डन अ टेस्ट फेल ओवर. नाउ लुकिंग एट दिस, कोई वार्निंग वगैरह कुछ नहीं है आपके पास. ओके, दिस इज इवेंट है, ये मैंने चेक कर लिया, ये इवेंट है, ये पास्ट में एक हुआ था. इट्स ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज हेल्दी. यस गाइस, क्लियर टू एवरीवन? नाउ आई विल डू द एक्चुअल फेल ओवर. एक्चुअल फेल ओवर हम दो केस में कर सकते हैं. एक तो है आपका कि आप मूवमेंट कर रहे हो, बट आई टोल्ड यू कि आप माइग्रेशन अभी यहाँ से नहीं करते हो, राइट? वी हैव Azure resource mover also, and we have Azure migrate. Migrate से भी आप कर सकते हो. इंटरनल मशीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ऑन प्रेम से जब लाना हो तब तो माइग्रेशन ही यूज होगा. सो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट डूइंग अ फेल ओवर. इमेजिन कि मेरा वर्चुअल मशीन वहां पे डाउन हो चुका है फॉर सम रीजन, रीजन चला गया, रीजन डाउन है, कुछ भी चला गया, बट दैट मशीन इज नॉट वर्किंग, दैट एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग. सो you'll come here, you'll click on fail over. Now it is fetching the data. It will check whether it can be performed or not. Validation is successfully done. Now it will give me the last time कि कब ये जो है sync हुआ था. So it says that it was sync at 3 p.m. right, which is hardly 2 minutes before this. So I don't even have to worry about it. But इतना क्विक होते नहीं है चीजें. एप्लीकेशन डाउन होता है, अलर्ट्स आते हैं आपके ईमेल पे, आपके यूजर्स उसको कंप्लेन करते हैं, 15-20 मिनट उस चीज में निकल जाता है, एंड यू डिसाइड, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आल्सो, राइट? सडनली यू विल नॉट गो अहेड एंड डू दी डीआर. यू विल चेक विथ माइक्रोसॉफ्ट के यार वो जो डाउन हुआ है उसको अप आने में टाइम कितना लगेगा. अगर माइक्रोसॉफ्ट सेज 1.5 घंटे में आप आ जाएगा, डू यू गाइज थिंक वी शुड गो अहेड एंड डू द डीआर? If Microsoft is claiming that your original site will be up and running in 1 hour or 1.5 hours, do you think we should be doing this failover? Because failover in production hour, it's gonna take 2 hours, minimum 2 hours, right? उसके बाद भी आपकी सर्विसेज किसी और रीजन से मिलेगी. So it's not at all a good decision. So ऐसा नहीं है कि the moment वहां पे मशीन शट डाउन हो गई और आप यहाँ पर आके ये करते हो. So उन चीजों में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, टाइम वगैरह हो जाता है. Okay, but what does it say in case? And it's not always the region down or machine shut down. मशीन बंद हो गई वो भी नहीं, मशीन is running but ऐप नहीं चल रहा है. मशीन is running but किसी और तरह की फंक्शनैलिटी ब्रेक हो गई है. So you do get an option here which you do not get in test failover, that shut down the machine before beginning the failover. So if I select this, मेरी actual machine जो है ना वो shut down हो जाएगी.
If you want, I'll show it to you. Look at my actual virtual machine. This is the machine I'm talking about, guys. This is my actual machine जिसको अब हम failover करने वाले हैं. I'll take a remote of this machine. This is a different machine. IP से है वो, जो उसको ignore करो आप. That is for backup purpose. I will explain that also to you. I'll just log into this machine and I'll show it to you how it gets shut down. I hope I'm able to log into this one. Okay, finally it worked. Okay, so this is the machine which is in question. Yeah. So I'll start my failover. Okay, I selected shutdown and I clicked on failover. Okay, that's all you have to do. उतना ही करना है आपको बस. It is starting the task. Look at this. It got shut down. Can you see this, guys? I hope you got it. So it will shut down my actual machine and now it will start the failover. Or because I did the test failover cleanup. Let me show it to you. Can you see? These disk and everything जो भी वहां पर create हुआ था, machine that has gone, right? Only VNet is there, that is fine. And ये वो disk है जो replicate हो रहा है जिसपे. This isn't the disk which was attached to my failover वाली machine. This isn't that disk. ये वो disk है जो failover हो, जिसके ऊपर replicate हो रहा है. Now using this disk एक machine बनेगी यहाँ पर. So it is in progress. We'll have to wait for that. Here it is. And if you want to see this in detail, maybe you can come to recovery vault, go to that service recovery vault, site recovery. आप यहाँ पर भी देख सकते हो, replicated items देख सकते हो, और in progress चीजें यहाँ पर देख सकते हो. Here you can see in progress. Here it is in progress. इसका जो है failover चल रहा है, अब in progress में है. You can come here also and see. यहाँ पर कोई मशीन, यहाँ पर भी आपको दिखेगा. And then यहाँ पर भी आप आके देख सकते हो उस एक्चुअल वाले. लुक एट दिस, एक डिस्क बन गया अब. ठीक है, रेप्लिकेशन वाला डिस्क से एक पहले डिस्क बनता है जिससे आपकी वीएम बनेगी. नाउ you'll see a VM also in some time. थोड़ी देर में आपको यहाँ पर एक VM भी दिखेगा. So this is your failover, guys. Once we are done with the failover, बहुत छोटे options है उसके बाद that एक बार failover हो जाए ना. So what is the sync, what is resync? I'll explain it to you. I have a question for you before that, and this will be answered automatically. Again, going back to storage. Under storage, I have GRS. Okay, it doesn't matter how many replicas I have, and my one region is down, right? And I do the failover from East US to West US. I'm doing the failover. This was my primary. This one, East US was primary. West US was my secondary. East US down हुआ, किसी reason से मैंने failover कर दिया. So what is the scenario after that? उसके बाद क्या होता है? Sync. Do you guys remember that? कि एक बार मैं इसको जब failover कर देता हूँ, then जो मेरा storage account है, वो किस इसमें रहता है? Durability वाले किस option में रहता है? Did you guys get the question? Don't just attempt with the keywords. If you did not understand the question, ask me. I will explain it again. My question here is that I have a storage account
which is under which is being replicated, which is under durability option of GRS. GRS का मतलब है दूसरे एक region पे भी sync हो रहा है वो. Something went wrong to my primary region, which is East US. I did a failover in storage. I'm talking. I did a failover, and now my data is up and running from my West US region. But after that, what is the condition of my storage account? Is it secure? अगर है तो किस वाले durability option में है? What would be the condition? So, Suhail bhai, your secondary account will become primary and it will convert into LRS. LRS. Yeah, who is that, Salman? Yes, Was bhai. that? Yes, Salman. perfect answer, Salman. तो ये नहीं होने वाला है आपका कि सेकेंडरी प्राइमरी बन जाएगा और प्राइमरी सेकेंडरी बनता रहेगा और सिंक भी चलता रहेगा. नो, सेकेंडरी आपका प्राइमरी हो जाएगा और वो एलआरएस हो जाएगा. सिंपल, बिकॉज एलआरएस इज द लीस्ट सिंक्रोनाइजेशन व्हिच यू हैव टू कीप. एलआरएस से कम तो कुछ रख नहीं सकते ना आप. सो इट इज एज गुड एज कि आपका ड्यूरेबिलिटी वो खत्म कर देगा. एंड इफ यू हैव टू डू इट अगेन, आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? सिंक करना पड़ेगा. फिर से आपने जैसे किया था आपको उसको इस तरह से सिंक करना पड़ेगा. राइट, सो आई होप यू रिमेंबर दैट. सिमिलर थिंग विल डू समथिंग लाइक दैट विल डू हियर. एग्जैक्टली उस तरह से नहीं है, बट रीसिंक्रोनाइजेशन उसी तरह से कुछ है. ओके, सो लुक एट दिस. यहाँ पर मशीन्स बने हैं या नहीं हमारे? ओके, लुक एट दिस. मशीन इज ऑलरेडी देयर, बट यहाँ पर देख के हम डिसाइड नहीं करते कि ये कंप्लीट हुआ है नहीं. विल ऑलवेज rely on those tasks, the one which we see here. If it shows completed, then it is completed. If it doesn't show completed, it is not. Backend में बहुत छोटे छोटे components वगैरह सब कुछ हो गए. So if it shows in progress, you are not going to touch it. But if it doesn't show in progress, it shows completed, then it's done. That's completely fine. So replicated item in progress कुछ नहीं है. So it's done. Your failover has been done successfully. Now if you look at this, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो पूरी की पूरी machines वगैरह यहाँ पर दिख जाएगी. Here it is. What is the difference do you see between test failover machine name and this one? What is the difference do you see? Test failover की machine आपने देखी थी, उसमें और इसमें क्या difference दिख रहा है? hyphen ASR. Yes, hyphen ASR was there. इसमें hyphen ASR नहीं है. Exact same आपके machine का नाम लिया है, so you don't even have to do the repointing वगैरह, वो भी नहीं करना पड़ता आपको कुछ. And look at this. Let me go to my machine first. ये वो मेरी मशीन है जो सेंट्रल इंडिया में, एक्चुअल मशीन, सोर्स रीजन वाली मशीन. Which has stopped now. What is the IP address, guys? What is the IP address? Can you see it? Do you want me to enhance it? Yeah. Zoom it. Okay. What is the IP address? Private IP. Forget the public IP. कभी use नहीं करता. I told you. I'm talking about private IP. What IP do you see? Can someone read it? Can you guys see it? 10.0.0.4. Right. And is this my source machine or the new machine? New machine. No, it is not a new machine, guys. DC. This is my source ASR machine. is missing. It is the source machine. No, you won't see who's that ASR. Was it Amit? नहीं, Whoever, Yusuf. that's okay. ना यूसुफ भाई, ASR ASR नहीं आएगा. ASR सिर्फ टेस्ट फेल ओवर में आता है, वही मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ आपको. बट लुकिंग एट दिस, आपको रीजन से पहचानना है और मशीन की कंडीशन से. जो मशीन अभी अप हुई है वो शट डाउन नहीं होगी. फेल ओवर करते वक्त हमने बताया था कि सोर्स मशीन को शट डाउन कर दो. सो लुक एट द स्टेटस ऑफ दिस मशीन व्हिच इज शट डाउन. लोकेशन देखो आप इसकी, सेंट्रल इंडिया जो मेरा सोर्स रीजन है. एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर इज आईपी एड्रेस. यहाँ पर देखो 10.0.0.4. और when you go to the machine which has created newly, see this is up. यहाँ पर ईस्ट एशिया जो है मेरा लोकेशन है. मशीन नेम में ASR आपका नहीं होगा. हाँ, if you are talking about
रिसोर्स ग्रुप नेम में वो बोल सकते हो, रिसोर्स ग्रुप नेम में ASR होगा, बट मशीन नेम में यहाँ पर भी ASR नहीं होगा, ASR सिर्फ आपका आएगा टेस्ट फेल ओवर में। बट लुक एट द IP एड्रेस भी सेम है, अदरवाइज यू विल नेवर एवर सी कोई एनवायरनमेंट या कोई ऐसा नहीं होगा जहां पर आप 2 मशीन्स पे सेम IP एड्रेस देखोगे, अनलेस इट इज अ डिफरेंट कंपनी, वो एक अलग चीज है। कैन यू सी इट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और पब्लिक IP नहीं होगा क्योंकि पब्लिक IP हम कभी यूज नहीं करते हैं। और पब्लिक IP अगर यूज कर रहे हो किसी में तो वो मैन्युअल, आपको DNS चेंजेस उतने मैन्युअल करने पड़ेंगे, रेप्लिकेशन का वो हिस्सा नहीं है। दैट इज व्हाट यू डू इन दोस 2 to 3 आवर्स, जब तक ये पूरा अप हो रहा है वो सब टाइम में आप लोग वही काम करते हो, you as in support people whenever they do that. Okay, so this is how it looks, and now this machine is up and running, मेरा सारा का सारा application exactly as it is है. So this is your failover, this is your DR, this is your failover. Any doubt guys still here? And this machine, your actual machine जो है आपका actual machine जो है source region वाला machine, this won't be deleted automatically. Okay, you can keep it shut down for month, जब तक आप इसको देखो, बाद में आप डिलीट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अपने आप डिलीट नहीं होने वाला है वो, दैट इज फॉर श्योर। माइग्रेशन में भी जो आपके सोर्स मशीन है वो अपने आप डिलीट नहीं होते हैं। इज इट क्लियर गाइस? हाँ, बट ये मशीन क्रैश ही हो चुकी थी, अब हो ही नहीं रही है, तो दैट्स ओके। मे बी यू कैन डू सम RCA वगैरह कि क्यों हुआ था वो चेक करने के लिए, यू कैन कीप इट, बट नथिंग मोर देन दैट। डिलीट अपने आप बिल्कुल नहीं होगी, यू गाइस विल हैव टू डिलीट इट। एनी क्वेश्चंस एनीवन? Okay, so now if I go to my actual machine and see disaster recovery, okay, it is asking me to commit. ये मैं कमिट कर दूंगा तो फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर आई स्टिल हैव दैट चांस, मैं लॉगिन करने के बाद चेक करता हूँ, एंड इट हैपेंस, ओके, लाइव एनवायरनमेंट में भी होता है। आई लॉग्ड इन एंड आई चेक कि मशीन में तो लॉगिन हो रहा है, बट एप्लीकेशन अभी भी नहीं चल रही है। मतलब हमने जो पूरा फेल ओवर वगैरह कर लिया ना, सही हुआ, लेकिन शायद किसी गलत पॉइंट से कर लिया, एंड देयर इज नो वे टू चेक इट कि कौन से पॉइंट पे मशीन चल रही थी, किसी को अच्छे से याद नहीं होता है। सो यू कैन गो हेड हियर एंड चेंज द रिकवरी पॉइंट कि इस रिकवरी पॉइंट से नहीं चला, मे बी आई वाज डूइंग इट फॉर सम वायरस एंड आई थॉट कि यार इस वाले में भी वायरस है, सो लेट्स ट्राई द प्रीवियस वन, लेट्स ट्राई इसके पहले वाला जो पॉइंट होता है वो ट्राई करो। कभी कभार ये भी करना पड़ता है आपको, 4-5 बार भी करना पड़ता है। ओके, so you can do that also, change the recovery point and do it again till the time you find your best version। जैसे ही आपका यहाँ पर एप्लीकेशन बनता है, you log in and you check, आप अपने ऐप ओनर को बोलोगे कि भाई मशीन में लॉगिन करो और चेक करो सब कुछ सही चल रहा है क्या। एंड इट्स नॉट नेसेसरी लॉगिन, समटाइम्स इट्स अ वेबसाइट, तो वेबसाइट पे लॉगिन करके भी चेक कर लेते हैं वो लोग क्या, नाउ दिस वर्जन इज फाइन, सो यू कैन डू इट। यहाँ पर आके आप चेंज कर सकते हो बार बार, राइट? failover is completed. Now is this machine being synced anymore? Replication हो रहा है क्या यहाँ पर? What do you think at this stage? यहाँ पर नहीं हो रहा है, okay, because failover is completed. If I click on commit, तब वो failover complete हो जाएगा, ऐसा कि आप recovery point भी change नहीं कर सकते हो। Okay, I clicked on commit. Are you sure you want to commit the virtual machine? Once you commit, you cannot change the recovery point of the virtual machine. बिकॉज मैंने लॉगिन करके चेक कर लिया उसमें, एंड आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ उसी पॉइंट से रिकवर करना था मुझको, मेरा जो कुछ डेटा लॉस था या वायरस आ गया था वो जो जो भी इशू था दैट हैज बीन एड्रेस्ड। तो वो जो मशीन मैंने वहां पर बनाई है दैट इज परफेक्ट एंड इट इज फाइन, आई कैन गो अहेड एंड कंटिन्यू विद दैट वन। देन आई विल पुट हियर एंड आई विल सेलेक्ट कमिट। Once the commit is done, your synchronization will be stopped. तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रीसिंक्रोनाइज पे क्लिक करना है, वो फिर से रीसिंक्रोनाइजेशन वगैरह आपका ये हो जाएगा, स्टार्ट होगा स्क्रैच से। और यू वांट टू प्रोटेक्ट, रीप्रोटेक्ट, रीसिंक्रोनाइज, ऑलमोस्ट सिमिलर है, छोटा सा गैप है, आई विल शो इट टू यू वंस दिस इज डन। एंड नाउ इफ यू वांट टू कंप्लीटली डिसेबल द एप्लीकेशन, यू कैन डू इट हियर बिकॉज यू आर यूजिंग इट फ्रॉम हियर। आपको नए रीजन में आपका सब कुछ मिल गया है। और जो नए रीजन की मशीन बनी है, लुक एट दिस, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर आके जो है आपका वो सब कुछ स्टार्ट होगा। नए वाले को अगर आप चाहते हो कि इसका भी रेप्लिकेशन शुरू कर दूं मैं, कि ठीक है द सेंट्रल इंडिया वाला रीजन में ओमिट ही कर रहा हूँ कंप्लीटली, बहुत बार डाउन होता है, बट आई विल बी यूजिंग दिस एज अ प्राइमरी एंड आई वांट टू
protect this machine also. So you can click on reprotect और यहाँ से आप जो है सेम चीज है फिर से ये कर सकते हो. This one we already saw yesterday. How to start replication. You can do that, and yeah, once this is committed, here it's done, completely done. You can reprotect this machine also, but there is no point. ये machine को reprotect करके आप करोगे ही क्या? ये वही machine है जो fail हो चुकी है, right? So there is no point to reprotect. हाँ, कभी कभार ऐसा होता है that इसको आपने इस पे काम कर लिया इसके disk वगैरह पे, and this is up, and now you're shutting down your secondary region because my complete users and everyone, they are in India, and I want to run it from India only, from central India, not from Asia. वो बस temporary चाहिए था मुझको. I'm shutting that down and bringing up everything here. आप reprotect यहाँ से फिर से कर सकते हो. Okay. Properties में क्या है? Let me see. Okay, nothing. It's just the information कि आपका status क्या है, activation location क्या है. ये this 24 hours retention policy मतलब 24 hours तक backup में आप retain कर सकते हो. कि ये पॉइंट नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पीछे जाओ, ये पॉइंट नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पीछे जाओ. आई थिंक 4 आवर्स के इस पे आपको वो पॉइंट्स मिलते रहेंगे. फेलओवर प्रॉपर्टीज के टारगेट वीएम का नाम क्या है, व्हाट इज दिस, ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट फ्रॉम हियर. कंप्यूट. ओके, कैपेसिटी रिजर्वेशन इसको छोड़ दीजिए, लाइक इट्स अ डिफरेंट टॉपिक. Let me show it to you on that machine. What all options do we have here? Okay, this is still being protected, hence we are not able to see this option. But यहाँ पर वही दिखता है, the one which we saw in yesterday's session. While protect, okay, one thing guys, I told you yesterday that if my source machine has SSD, okay, source machine में मेरा SSD है, premium SSD, so at the replication at DR, it's not necessary for me to take SSD. वहां पर मैं normal HDD भी ले सकता हूँ just to save my money. But उसमें issues भी आते हैं कई बार, because SSD, premium SSD का read and write speed बहुत fast होता है, right? Let's say this is my machine with SSD, premium SSD, और मैं यहाँ पर जो है एक मेरा रिकवरी सर्विस वॉल्ट है, लेट्स से, व्हिच इज इन एशिया, और यहाँ पर वो डिस्क है जिसमें वो रेप्लिकेट हो रहा है. I hope by now it is clear your disks are being replicated. मशीन एक्चुअल में कुछ चीज नहीं होती रेप्लिकेट होने के लिए, राइट? और यहाँ पर मैंने ले लिया स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क. ओके, यहाँ पर है प्रीमियम एसएसडी और यहाँ पर है स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क. तो ये जब इसका रेप्लिकेट होता होगा, जो भी यूजर्स इस पे लिख रहे हैं, ये तो राइट स्पीड बहुत फास्ट है, राइट? बहुत, लेट्स से ये जीबीज में डेटा लिख रहा है एक एक मिनट में, बट यहाँ पर रेप्लिकेट सेम स्पीड से नहीं होगा. सो इट माइट क्लैश, इट माइट करप्ट, इश्यूज होते हैं. हेंस इट इज रेकमेंडेड टू टेक योर प्रीमियम एसएसडी. यहाँ पर एटलीस्ट प्रीमियम नहीं तो स्टैंडर्ड एसएसडी, जस्ट टू सेव योर मनी. एक कुछ डॉलर्स बचाने के लिए, कुछ रुपीस बचाने के लिए, यू विल नेवर एवर प्ले विथ योर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? Technically it is possible to go ahead with the standard HSD. It is not recommended. Again, that depends on the nature of the application. Application owner बोलता है मुझको पता है कि मेरे इसमें कभी इतना फोर्स में डेटा आता ही नहीं है, हफ्ते में एक ही बार डेटा आता है, मेरा डेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझको डीआर चाहिए, फ्रीक्वेंसी नहीं है मेरे डेटा में. इफ एप्लीकेशन ओनर कंफर्म्स दैट, देन यू विल हैव दिस, यू कैन कीप दिस स्टैंडर्ड HDD. बट अगेन आई टोल्ड यू कि यू विल नेवर फेस द क्लाइंट, और ये सब बातें आपको क्लाइंट से करने का कभी मौका नहीं मिलेगा. दिस योर आर्किटेक्ट टीम, वो अपने आप ही डिस्कस कर लेते हैं क्लाइंट से, एंड देन दे डिसाइड समथिंग फॉर देम, एंड दे डिसाइड इट फॉर देम, और उस बेस पे वो प्लान बना भी लेते हैं, एंड देन दे गेट इट अप्रूवल आल्सो फ्रॉम क्लाइंट्स आर्किटेक्ट, क्लाइंट्स, उनके जितने भी हेड वगैरह हो गए, जो जहां से भी अप्रूवल लेना है आपके पास जो अल्टीमेटली आता है, दैट इज योर अप्रूव्ड प्लान. So you just have to make sure that you're implementing that, but you should have understanding of this, that what could be the replication if I keep premium SSD here, or replication में मैं standard HDD लेता हूँ, so what could be the replications? Technically it is possible, but it is not recommended. Is it clear guys to everyone? Yes. Okay, let's go back to storage, to backup topic. Few things I wanted to show to you.
So I'll go to my vault. This is the backup vault I have. I'll go to backup. Two backup items I have. What are the methods I can recover a backup, guys? What are the methods I can recover? कितने options है? I mean, you already got the answer by the. Restore VM में क्या होगा? उसमें दो ऑप्शन है, एक तो नया VM क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप बेस को भी रिप्लिकेट कर सकते हैं. Okay. So if I select this one, I can create a new VM. Scratch से completely एक new VM बनेगा. Okay. From scratch, it will be a new VM. Or you can replicate, you can replace the existing VM. That you can do, or you can do the disk. Sorry, this is disk. Replace VM वाला मैं बताता हूँ. This is disk replacement. इसमें क्या होगा? आपके वो VM के डिस्क जो है बस एक डिस्क बने रहेंगे, उसमें वर्चुअल मशीन नहीं बनेगा. लाइक इन DR कैसा डिस्क बनता है सिर्फ, वैसे डिस्क बना रहेगा. आप उस डिस्क को कहीं और अटैच करके उसमें का डेटा निकाल लो एज अ डिस्क अटैच करके, या फिर आप उससे VM बना लो. इट्स अप टू यू. So that is one option. I'm going too fast, a bit fast here because we have done this already. This is not the first time we are doing it, right? Hence I'm going a bit fast. And the file recovery option we have seen. यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक particular disk को retrieve करते हैं with the help of PowerShell script. We can mount it to one of your Windows VM and वहां से data copy करते हैं. इसके limitations क्या है? Data का size कितने से कम होना चाहिए? 100. 10 GB. 10 GB. 10 GB. Yeah. 10 GB. All these 10 GB. properties you should say it, guys, in your interview. It gives very good impression. ये सब numbers और figures आप जो है ना खुद से बोलो. You should not wait for the interviewer to ask you. Okay. एक और limitation क्या है? 10 GB के साथ साथ 12 घंटे. 12 घंटे में वो जो है अपने आप unmount हो जाएगा. Right? And restore VM में you can replace the same VM. कि आपका same VM जो है वो चला ही जाएगा. But you will not see the replacement of VM नहीं जल्दी देखोगे आप, क्योंकि RCA भी करना होता है. The moment you replace your VM, आपके existing VM का disk delete हो जाता है, and that will not help when it comes to RCA. तो RCA के लिए आपको वो details भी चाहिए होती है. Okay, so these are the options available. But if I go ahead and try to restore one encrypted VM, do you think I will have the same options? If I try to restore encrypted VM, do you think I will have the same options, guys? Let's try this. Yeah. No. Yes, we will not have that. यहाँ पर दिख रहा है, but somewhere it will give some error, or maybe this wasn't उसका नाम है encrypted, उसको मैंने शायद encrypt नहीं किया है. But when it comes to encrypted, you will not have all those options. Encrypted में क्या कर सकते हैं? I'll show it to you. We'll take a break of 5 minutes. A session is about to finish. We'll just take a break of 5 minutes because there is nothing कोई in progress, कुछ चीज चल नहीं रही है. I'll just wait for the video to finish. I'll see you guys at what is the time? 15:30. Let's take a 2 minutes break. That should be enough. 15:30, 3:30. I'll see you guys. Same link.